नहीं नहीं ढूंढने के लिए नहीं टाइम पे आज भी मैं टाइम पे थोड़ा सा एक स्टूडेंट था तो आई वाज यू नो डीलिंग विद हर ज्यादा लेट हो गया क्या 6 minutes yes I was actually suggesting to a new students right तो थोड़ा सा टाइम लग गया मैंने सोचा थोड़ा सा लेट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है so have you attempted test ठीक था क्वेश्चन बन रहे थे नहीं किया है अब लेके कर लेना नो इशू एट ऑल मतलब देखो अब उसको लेकर के इसको अटेम्प्ट करिए ऐसा ऑन सैटरडे आई विल डिस्कस ऑन सैटरडे आई विल टेक योर क्लास सैटरडे देयर विल बी टेस्ट डिस्कशन एंड टेस्ट डिस्कशन पर्टिकुलरली क्योंकि सैटरडे में आपका क्लास नहीं होता है बट इस सैटरडे होगा मैं कोशिश करता हूँ हाँ लंबा रखेंगे मतलब कम से कम 2 घंटे तो रखेंगे 3 घंटे 3 आवर्स मैं तो 6 घंटे भी पढ़ाऊं नो इश्यू एट ऑल थोड़ा टाइम देके बीच में 10-20 मिनट्स 15 मिनट्स का गैप दो एंड देन Saturday I'll take talk yes discussion hello Shelly Sharita Tamanna Kanika Ashu Aman Priyansh ठीक है सो टेस्ट को अटेम्प्ट करके अपने पास रखना है कीप इट विथ योर ओन सेल्फ ऑन सैटरडे विल डिस्कस अच्छा ये मुझे बताओ कि हम कर क्या रहे हैं we are talking about president ना and pardoning power हमें डिस्कस करना है ठीक है आज इलेक्शन कमीशन का ये क्या हो रहा है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है आफ्टर 34 इयर्स कल आएगा न्यूज़पेपर में अच्छे से just focus on what they are talking about today is 24th right आज चौथी सालगिरह है रसिया यूक्रेन वॉर की ठीक है now it is the longest war let me tell you in the post world war ठीक है this war has endured basically right Ukraine war has basically endured war right तो बहुत कुछ आने वाला है you just focus on it what world has lesson learned from the Russia Ukraine war and how make it how did it make basically impact now let me come to the agenda of the day and pardoning power chalo Now, if you see pardoning power of the president under Article 72, president has power to give pardon, right? Now, if you look at governor has also similar power, right? Under Article 161. राइट गवर्नर के पास भी वही पावर है आर्टिकल 161 बट थोड़ा अंतर है गवर्नर के पार्डनिंग पावर में और इनके पार्डनिंग पावर में गवर्नर प्रेसिडेंट कैन पार्डन टू अ सेंटेंस इफ द सेंटेंस इज डेथ सेंटेंस अगर डेथ सेंटेंस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको भी पार्डन कर सकता है कौन प्रेसिडेंट ठीक है दूसरी बात दूसरा डिफरेंस है if sentence is given by the military court martial right then the president can give pardon
But in case of governor cannot pardon, right, a sentence if sentence is death sentence, or if the sentence is given by the court martial. Otherwise, the pardoning power of the president and pardoning power of the governor are basically same. दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है. बोथ कैन गिव पार्डन, ठीक है. अब ये पार्डनिंग पावर रखा क्यों गया? By why pardoning power has been kept in the Indian Constitution? The pardoning power of the president has been kept in order to undo some error in the law, right? Some error done by the judiciary. हम कहते सुप्रीम कोर्ट, कहते ना, वर्ड नाम क्या उसका? सुप्रीम कोर्ट. आजिए. But Supreme Court is supreme, yet it is fallible, right? Supreme Court is a supreme, but yet it is fallible. और इसको बोलते हैं yet it cannot be infallible. मतलब it is not that it is not infallible. It can be fallible. एक किताब का टाइटल है सुप्रीम बट इनफॉलिएबल, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, राजू रामचंद्रन का, राइट? सो सुप्रीम कोर्ट भी गलती कर सकता है. जब सुप्रीम कोर्ट गलती कर सकता है तो उसको अंडू करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए क्या है हमारे पास? पार्डनिंग पावर है टू द प्रेसिडेंट. समझ में आया? पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है. अब जो पार्डनिंग पावर है, बहुत तरीके के पार्डनिंग पावर है. एक तो सिंपल बोलते हैं पार्डनिंग. ये टर्म यूज कब करते हैं? जब सेंटेंस डेथ सेंटेंस है, राइट? अच्छा, उसको पार्डन कर दिया, यानी कि डेथ सेंटेंस को सिंपली फ्री कर दिया पर्सन को, ठीक है. फिर उसके बाद बोलते हैं कम्यूटेशन. कम्यूटेशन मतलब क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट पनिशमेंट इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल पनिशमेंट. मान लीजिए कि किसी को डेथ सेंटेंस मिला है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? उस डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकते हैं, राइट? एक एग्जांपल देता हूं. राजीव गांधी के जितने भी असैसिनेट्स थे, राइट, जिसने असैसिनेशन किया था, they all got death sentence, but what president did? He commuted to the basically life imprisonment, ठीक है. So that is called commutation. One is called pardon. What is a pardon implies? Set the person totally free, ठीक है. Now what is second one? That is called commutation. What is commutation? Changing the original basically original sentence with some lesser sentence. It is a substitution, right? For example, the death sentence can be commuted to the life imprisonment. Now after this commutation, there is called remission. Remission मतलब क्या होता है कि just short the tenure of the punishment. मान लो 20 years का punishment है, तो उसको क्या कर दिया, राइट? 10 साल अगर कर लिया, उसके बाद कम्यूट दे दिया, यानी कि 10 ही साल ठीक है, राइट? पीरियड को, इसमें नेचर नहीं चेंज होता है. मान लो कि 20 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, तो मतलब वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 साल का हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड रिमिशन. reducing the period of sentence without changing the character of the sentence, ठीक है. उसके बाद है रेस्पाइट. रेस्पाइट क्या होता है, राइट, कि टू गिव लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल वन. ओरिजिनल वन कौन देता है? जुडिशरी, ऑफ कोर्स. So give lesser sentence in place of original sentence because of the certain characteristics of the person. Like for example, someone may be physically not fully fit, right? That is called differently able person or persons with disability. अब कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी, ठीक है. अब उस इंसान को लगा कि मैं ना बिल्कुल कोर्ट ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, राइट? They will file a pardoning, they will file this, ठीक है. अब एग्जीक्यूटिव क्या कर सकते, प्रेसिडेंट क्या कर सकते? प्रेसिडेंट उसको
एक लेसर सेंटेंस दे सकते हैं. व्हाई? बिकॉज he is suffering from the certain things. और फॉर एग्जाम्पल किसी सेंटेंस किसी प्रेसिडेंट कोई पर्सन है, राइट, एंड that has given harsh punishment by the judiciary. For example, mentally retarded person. Like the example, mentally retarded person, right? अब उसके फैमिली वाले क्या करेंगे? वो ये डालेंगे पार्डनिंग पावर के लिए, ठीक है. अब क्या होगा? प्रेसिडेंट हैज पावर टू गिव रेस्पाइट, दैट रिमिशन, नॉट रिमिशन हो गया, रेस्पाइट, ठीक है. या मान लो प्रेग्नेंट वुमन है, ठीक है. तो व्हाट इज रेस्पाइट? गिविंग लेसर सेंटेंस बाय द प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ द सर्टेन inability of the person or certain characteristics of the person, like mentally retarded or physically disabled or pregnant. That is called respite. Now next is called reprieve. Reprieve क्या होता है? That is the last one, fifth one. Reprieve होता है कि to put stay on punishment for let's say for 7 days or 10 days or 20 days. कुछ नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत सारे मूवी में भी दिखाया जाता है कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है. वो बोलता है मुझे उससे मिलना है, तो ठीक है, इसका जो एग्जीक्यूशन है वो 7 दिन के लिए रोक दिया जाए, उनको मिलवा दिया जाए, राइट. सो दैट इज कॉल्ड, राइट, reprieve. Putting stay on the execution of a sentence, particularly, especially it is done in death sentence. So there are several types of pardoning power. कौन सा? फिर से मैं बोलता हूं, pardoning, that's called pardon, right. दूसरा क्या बताया? commutation. commutation, right. तीसरा क्या बताया? remission. चौथा क्या बताया? respite. पांचवा क्या बताया? reprieve. ये 5 है. अच्छा, 5 में से जो ये वाला है ना, डेथ सेंटेंस को ये नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट नहीं कर सकते, सॉरी, गवर्नर नहीं कर सकते. Sir, बोलो. sir, is it not against the rule of law when a person is set No. free? Sir, is in the case of बहुत सारी Rajiv मूवी आई Gandhi, है. लॉ इज in ब्लाइंड. no sir, in Rajiv Gandhi case, आंखों पे पट्टी रहता है, जो तराजू लेके वो लेडी खड़ी रहती हैं कोर्ट में, वो क्या रहता है? वो ब्लाइंड रहता है, राइट. अगर आपने कोर्ट ड्रामा देखी है, कोर्ट ड्रामा बहुत सारी मूवी देखी होगी, राइट. पॉपुलर मूवी है ये जॉली एलएलबी, आपने देखी है. जज को पता होता है, राइट. होता क्या है? सी प्रियांश, every whosoever is in prison does not mean that person is criminal, right. क्या होता है? It's not violation of law. It is a basically justice, right. It is if done we look the on Rajiv Gandhi case, error in the law. Yeah, go ahead. Yes. in Rajiv Gandhi case, they were the terrorists who killed the prime minister during his rally. So how it can be said that freeing them, and in freeing them, in commuting their sentence, it was not that it was proved that they were not guilty of killing him. ऐसा तो हुआ, साबित नहीं हुआ कि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे. फिर उनकी सजा कम क्यों की गई? ये तो रूल ऑफ लॉ का मतलब वायलेशन है ना. ठीक है. That's great. See, you are talking about the Murugan's and other, how many of you are aware about the Rajiv Gandhi assassination? फुली अगर आपने डिटेल कवर किया है तो बताना, अदरवाइज लुक एट जो लोगों ने इन्वॉल्व थे, दे वर द बेसिकली. अगर आप देखेंगे मुर्गन, जिनको ये मिला है, पहले तो ये मिला है, कम्युनिकेशन मिला है, उसके बाद रेस्पाइट मिला है, ठीक है. रेस्पाइट नहीं, रेमिशन मिला है, शॉर्ट पीरियड कर दिया है,
रेमिशन मिला है। आप देखेंगे एक भी लोग डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थे, उनके यहाँ किसी के यहाँ कोई आके ठहरा था कोई, राइट? इट वाज बेस्ड ऑन सस्पिशन। मान लो कि मैं ही तुम्हारे घर पे जाता हूं, तुम्हें पता नहीं कि मैं एक टेररिस्ट हूं, मैं ठहर गया, राइट? मैंने कहीं जहां पे कांड कर दिया, ठीक है? अब पुलिस ने क्या किया, तुम्हें पकड़ी। प्रियांश ध्यान देना, अब तुम क्या करोगे? पुलिस ने तो जज ने तुम्हें दे दिया, अब चलो पूरी जिंदगी भर तुम जेल में रहो। बहुत सारी मूवी आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी कहानी होती है, राइट? जो क्राइम करता है वो बताता तो नहीं कि मैं क्राइम करूंगा, उसकी क्रिमिनलों की एक अपनी दुनिया होती है, राइट? वो उनको पता होता है, राइट, कि कहाँ पे क्या है। किसी के यहाँ ठहर गए तो आपने जो मुर्गन और उनके जो भी लोग थे, 5 लोग उसमें इन्वॉल्व, जिनको पहले कम्यूटेशन मिला, उसके बाद रेमिशन मिला, अगर आप डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है, तो कोई भी इन्वॉल्व नहीं था उसमें। प्रियांश Sir, can the judiciary give sentence against a person on basis of suspicion without any fact? मैं बता रहा हूं, सस्पिशन नहीं, मैंने क्या कहा, फैक्ट्स ये था कि उनके साथ उनके घर पे रुका हुआ था, फैक्ट्स तो है, फैक्ट्स तो है, सस्पिशन पे तो था नहीं, So, सस्पिशन पे तो but जुडिशरी it is कभी not देती ही the नहीं है। in fact of involvement ना। अब मैं अगर कहीं ऑटो से जाके किसी का मर्डर कर रहा हूँ तो वो ऑटो वाले को थोड़ी ना उसमें इन्वॉल्व माना जा सकता। अब क्या हुआ, he was a prime minister, he was killed, right? The case was larger, there was a pressure on judiciary. आपको क्या लगता है कि जजेस इम्पार्शियल होता है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? इट्स नॉट अ वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, राइट? द पार्डनिंग पावर इज नॉट अ वायलेशन ऑफ द लॉ। एनीवे, ठीक है? So did you get the idea of pardoning power? Pardoning power is basically the executive power, right? ठीक है, to give pardon to a person who has been, victim of either due to error in law or due to the excess punishment or excessive punishment, right? अब ऐसा नहीं कि हर वक्त ये इन्वॉल्व होती है, राइट? इसको अपील करना होता है, फिर एग्जीक्यूटिव उस पे कमिटी बिठाती है, फिर इंक्वायरी होता है पर्टिकुलर, इट इज ए पैरेलल, राइट? फिर उसके बाद रिकमेंडेशन जाता है प्रेसिडेंट को, देन प्रेसिडेंट give either pardon or commutation or remission or despite whatsoever. Right. See. Yeah. बोलो. Yeah, there may be case. See, there may be many cases where the person has spent, their long period of time, 20, 21, on a crime in which he is not involved. Right? It happens. There is no procedure for compensation in India. There is no process of compensation. That should be. मैं बता रहा हूँ, कंपनसेशन ये हो सकता है कि भाई जो इंसान जो फंसाने में इन्वॉल्व था, राइट, उनके खिलाफ केस शुरू करो और इमीडिएटली पुट देम बिहाइंड द बार, राइट? लेट मी टेल यू, इट्स वन केस, देयर आर अ सीरीज ऑफ केस, राइट? एक इंसान 17 साल में जेल में जाता है, 19 साल में जेल में जाता है और निकलता है अपने 42 साल में, 45 साल में, ऐसा होता है, राइट? और कोर्ट उसको क्या बोलते हैं, बाई इज्जत बरी कर देता है, राइट? द वर्ड बोलते हैं बाई इज्जत बरी। बट उसके दौरान जो उसके स्टिग्मा है, उसके साथ फैमिली के साथ बहुत कुछ होता है, राइट? और उसका जो टाइम स्पेंड जाता है, कोई रिटर्न नहीं है, देयर इज नो कंपनसेशन, ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं इंडिया में, राइट? दिस इज अ वन फॉर्म ऑफ इनजस्टिस व्हिच प्रिवेल्स, देयर आर मेनी फॉर्म ऑफ इनजस्टिस व्हिच प्रिवेल्स इन सोसाइटी, राइट? एंड वन फॉर्म इज दिस, ठीक है? आपको लगता है कि जो सोसाइटी है वो जस्ट सोसाइटी है? नहीं है भाई, जस्ट सोसाइटी नहीं है, राइट? सोसाइटी में इनजस्टिस ज्यादा है, जस्टिस कम है, ठीक है?
जजेस रहते हैं उनको जस्टिस कहते हैं, क्योंकि तो जो इनजस्टिस होता है उसके खिलाफ सी जवेन का जजेस जो डिसीजन लेता है ना, डिसीजन अपने ओपिनियन पे नहीं लेगा, अपने सस्पिशन पे नहीं लेगा। जजेस को जो सारे फैक्ट्स दिए जाते हैं उस वक्त वो जो नेचुरल जस्टिस की तरह, नेचुरल जस्टिस आई टॉट यू ना, राइट, कि वो हर पहलू को सुनता है उसके बाद सजा सुना देता है। अब हो सकता है कि जो कंपीटिंग पार्ट दूसरी पार्टी है, दे मे नॉट मूव टू द हायर कोर्ट यू नो अर्ली। अगर मूव भी कर गया, मैं आपको जुडिशियरी पढ़ाऊंगा, डू यू नो 5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन इंडियन जुडिशियरी, 5 करोड़। तुम कभी कोर्ट गई हो, देखो थूक थूक के लोग किधर किनारे में क्या कर देते हैं। I'll teach you what judiciary is facing crisis in India, right? You know, per capita allocation for the legal services is one of the lowest in India. We have insufficient number of judges. We have 17 judges per million population, where China has 159. Do you think that the judges would able to deliver justice soon? No. राइट, ये तो मैं आपको पता है, आपको 95% सॉवरेन कोर्ट्स हैव नो मेडिकल फैसिलिटीज। अगर जज को तबियत खराब हो गया तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, राइट। द कोर्ट्स हैव अराउंड 30% कोर्ट्स हैव नो रिकॉर्ड रूम, राइट। 30% कोर्ट्स हैव नो फंक्शनल टॉयलेट फॉर वुमेन, नो फंक्शनल टॉयलेट फॉर वुमेन। मैं टॉयलेट नहीं बोल रहा हूँ, फंक्शनल टॉयलेट फॉर वुमेन, राइट। सो जुडिशियरी इज फेसिंग अ क्राइसिस, ठीक है। तो इनजस्टिस होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नॉट द जज, ठीक है। However, nepotism and corruption is also part of the judiciary that we all know, ठीक है। Now let me move to the pardoning power. लिखिए तो जरा pardoning power को लिखिए। आर्टिकल 72 of the Indian Constitution, Article 72 of the Indian Constitution empowers, Article 72 of the Indian Constitution empowers the President to grant pardon. Article 72 of the Indian Constitution empowers the President to grant pardon to persons who have been tried and convicted. Pardon to persons who have been tried and convicted, who have been tried and convicted of any offense, where the punishment is for an offense against a union law, where punishment is for an offense of the offense against a union law, to a person who have been tried and convicted for of any offense where punishment is for an offense against a union law, comma, punishment or sentence is given by court martial, comma, punishment or sentence is given by a court martial. Next, comma, sentence is a death sentence. Sentence is a death sentence. I'll repeat again. Let me repeat. Article ताकि डाइवर्ट ना हो जाऊं, क्या
Article 72 of the Indian Constitution empowers the President to grant pardon to a person who have been tried and convicted of any offense where the punishment is for an offense against a union law, comma, punishment or sentence is given by the court martial, comma, sentence is a death sentence. समझ में आया? Right? That is a president. किसी का छूटा तो नहीं? Anyone online? कोई लिख, someone was writing, so I thought I should repeat. Sir, are there any condition or limitations over granting of pardoning power by the president as if a person has committed a heinous crime like murder, rape? I'll talk about Kanika. I'll talk about your case, but later on. Sir, Yes, go ahead. sir, this Yeah. pardoning power is exercised on discretion by president or on the advice of the council of ministers. मैं बता दूं ना, मैं the honorable president, does not do any official work without the aid and advice given by the council of ministers. Last class में कोई मुझसे मिली और president के बारे में पूछ रही थी, right? Someone was asking, she is not present in the class, right? कि सर प्रेसिडेंट क्या, मैं बता दूं प्रेसिडेंट की कोई भी काम, केवल खाना खाते हैं अपने मर्जी से, शायद सोना भी नहीं मिलता है, क्योंकि अगर काम मिलेगा टास्क तो उनको करना पड़ेगा, राइट? खाना अपने मर्जी से मिल जाता है कि क्या खाना है, ठीक है, पहनना है, दैट्स आर्टिकल 21 है भाई, राइट? उसके बाद मैं बता रहा हूँ बहुत सारे ऑफिशियल वर्क है जो प्रेसिडेंट को असाइंड है, करना पड़ता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एड एंड एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स नॉट अ सिंगल डिस्क्रिशनरी पावर टू द प्रेसिडेंट. This constitution gives, sir, not a single discretionary power to the president. एक भी discretionary power नहीं है president के पास, चाहे वो pardoning का काम हो, चाहे वो ordinance का काम हो, चाहे वो किसी और का काम हो. जो भी मैंने आपको executive का काम बताया है या financial, मान लो कि मैं बताऊं कि भाई okay, money bill is introduced in the parliament with the prior approval of the president. प्राइवेट अप्रूवल मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो कर देते हैं, प्रेसिडेंट कर देते हैं, राइट? इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि इंडियन प्रेसिडेंट इज अ मेयर रबर स्टंप. इंडियन प्रेसिडेंट इज अ मेयर रबर स्टंप कहा जाता है भाई. पॉकेट वीटो और डिस्क्रिशनरी, देखो जब हम ये क्वेश्चन देते हैं कि यस इज प्रेसिडेंट इज अ रबर स्टंप, देन उस वक्त हम पॉकेट वीटो का चर्चा करते हैं. पहले हम तो बोलते हैं कि नहीं सारा काम एड एंड एडवाइस ही करेंगे, फिर बाद में हम लिखते हैं कि नहीं प्रेसिडेंट हैज सर्टेन पावर दैट इज कॉल्ड लाइक पॉकेट वीटो और सिचुएशनल डिस्क्रिशन हैज, राइट? ठीक है, तो कह सकते हैं पॉकेट वीटो, बट पॉकेट वीटो कब कितने बार यूज हुआ है? नहीं यूज होता है, राइट? सो पॉकेट वीटो को कह सकते हैं कि डिस्क्रिशन पावर है, बट अगर आप गवर्नर से कंपेयर करोगे, गवर्नर हैज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, बहुत ज्यादा है, ठीक है? इनके पास नहीं है, इनके पास सिचुएशनल है. आई विल डिस्कस अबाउट इट. तो मैं कह रहा था पार्डनिंग पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. समझ में आया? नाउ मूव. Next point you write, लिखिए, the pardoning power of the president is independent from the judiciary. The pardoning power of the president is independent of the judiciary. There are two next point, there are two objectives behind pardoning power. There are two objectives behind the pardoning power. First, there are two objectives behind the pardoning power. First,
to keep the door open for correcting the judicial error. To keep the door open for correcting judicial error. To keep the open door for correcting judicial error. Second, to afford relief. To afford relief. To afford relief from sentence. From sentence, which is duly harsh. Which is duly harsh. Regarded by the President. Which is duly harsh regarded by the President. Right. The President exercise 5 types of pardoning power. The President exercise 5 types of pardoning power. First, you write pardon. First, you write pardon. It implies set the person free. It implies set the person free. It implies set the person free. From sentences. From sentences. Right? Now, third, you write commutation. Second one. Commutation. 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 Okay. It implies to give an alternative punishment. To give an alternative punishment of lighter form. Of lighter form. In place of the original sentence. In place of the original sentence. Lighter form in place of original sentence. For example, death sentence can be commuted to. Death sentence can be commuted to life imprisonment. Death sentence can be commuted to life imprisonment. What idea? Now write remission. 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 Okay. It denotes reduction of tenure of sentence. It denotes reduction of tenure of sentence without changing its character. Without changing its character. Without changing its character. मान लो कि अगर सिंपल इम्प्रिजनमेंट है तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा. रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मतलब वहां जाकर काम करना है आपको. राइट. वो भी एक पनिशमेंट ही होता है.
पत्थर तो, हाँ, मूवी में देखा पत्थर तोड़ रहा है, वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होता है उनको। तो अगर ऐसा नहीं कि आपने जो ड्यूरेशन भी साउंड शॉर्ट कर दिया और उसको उसका कैरेक्टर भी बदल दिया, नो। यहाँ पर क्या होता है, यू जस्ट शॉर्ट, कट शॉर्ट द tenure of the sentence, not the character of the sentence. That is called remission, right? Now character change होगा, यहाँ पर लिखिए respite, respite, respite. It refers to awarding sentence, awarding a less harsh sentence. It refers to awarding less harsh sentence in place of the original one, in place of the original one, due to certain special facts, due to certain special facts. For example, pregnancy, comma, mental retardation, physical disability, and so on. समझ में आया? Right? Now write reprieve. Okay, it implies to put stay on. It implies to put stay on execution of a sentence. It implies to put a stay on execution of sentence for a temporary period. For a temporary period. ये भी बहुत सारे मूवी में दिखाई जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट ने इतने दिन, इतने टाइम के लिए रोक लगा दी थी इनके एग्जीक्यूशन के लिए, राइट। अच्छा, ये भी ऐसा भी होता है कि जिस दिन एग्जीक्यूशन होना है उससे पहले एग्जीक्यूट हो जाए, होता है कभी, बट ऐसा हुआ है। बट इस टाइम पे भगत सिंह वाज एग्जीक्यूटेड बिफोर द डे, मतलब बिफोर हिज एग्जीक्यूशन वाज फिक्स्ड, राइट। So pardoning power is just to ensure injustice, right? To basically do some justice with the person. Got the idea? So that is about the president. Now look at governor, right? Okay. Under Article 161, the governor has also pardoning power. The governor has also pardoning power. He can also grant pardon. He can also grant pardon. He can also grant pardon, reprieve, respite, remission, and commutation. But
the governor's pardoning power, but the governor's pardoning power has a difference with the presidential pardoning power in two respects. The governor's pardoning power has difference with pardoning power of the president in two respects. Done? Right. Okay. The president can pardon if sentence is death sentence. The president can pardon of a sentence if the sentence is death sentence. The president can pardon a sentence if the sentence is death sentence. The governor cannot. The governor cannot. The governor cannot. Now, second one, okay, the president can pardon. The president can pardon sentence if the sentence is given by the military court. The president can pardon a sentence if the sentence is given by the military court. The governor cannot exercise pardoning power in such case. The governor cannot exercise pardoning power in such case. समझ में आया? अब किसी ने पूछा कि भाई सर अपने आप करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा, मैं कौन होता हूँ सुप्रीम, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी चीजों पे नजर रखता है, राइट, कि भाई कैसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिकॉज हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? The Supreme Court. Also custodian and guardian of the constitution is Supreme Court. Irrespective of the fact that if you look at the two person, you know, जो दो ऑफिस है इंडिया में, वो ओथ जो लेते हैं वो ओथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को सुरक्षा करने का. कौन कौन है दो? द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. गवर्नर भी यही कसम खाते हैं कि मेरा काम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना. और लोग कहते हैं कि हाँ सोवर्निटी और इंटीग्रिटी की रक्षा करूंगा, वेलबींग करूंगा, राइट, संविधान के को पालन करूंगा. बट जो दो लोग हैं, दो ऑफिस है, वो है गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट. उनका काम ही है टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. बट द अल्टीमेट प्रोटेक्टर, राइट, अभी आ चुका है एक्चुअली एक सवाल, राइट, जो अल्टीमेट प्रोटेक्टर है ना वो क्या है? Sir, Now one more, yeah, go ahead, Priyansh. Sir, the president gives pardoning only in case of union law, or it can give in case of state laws no. also. यूनियन स्टेट लॉ के लिए प्रेसिडेंट यूज होता है. सॉरी, गवर्नर. So if a person is convicted under UP कोका M कोका, governor president cannot do anything in it. The law and order is actually yes, अगर मान लो यूनियन लॉ को वायलेट किया है तो प्रेसिडेंट कैन गिव, नॉट द गवर्नर. अगर यूपीए जैसे तुमने एग्जांपल दिया है, No sir, M कोका या UP कोका. तब वो दे सकता है. गवर्नर कैन गिव. Okay sir. गवर्नर कैन गिव. अगर मुर्गन को जो दिया है, पहले तो प्रेसिडेंट ने दिया, कम्यूट किया, राइट, कि भाई डेथ सेंटेंस से उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला. उसके बाद गवर्नर ने एक पावर एक्सरसाइज किया था, राइट. ना लिखिए, एक जजमेंट का नाम लिखिए. देखिए, इफ द लॉ इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है,
if some person is convicted for violating the central law, right, then the central government will give. For example, look at the मान लो सोनम वांगचुक किसी भी तरीके से, right? So Sonam Wangchuk has been arrested under the national law, National Security Act. Now it is a central authority will give the pardoning power. ठीक है? Now right, लिखिए the Supreme Court in Satpal versus State of Haryana. The Supreme Court in Satpal versus State of Haryana held that the Supreme Court in Satpal versus Haryana State of Haryana held that the governor can exercise pardoning power. The governor can exercise pardoning power. Only the aid and advice given by the Council of Ministers aid and advice given by the Council of Ministers headed by the Chief Minister. अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, ये पावर है, यूएस में भी है और इंडिया में भी है. The US president also can pardon, right? यूके में क्राउन के पास है ये पावर. क्राउन में वहां पर यूएस में वहां पर बोलते हैं प्रेरोगेटिव. It is a privilege of the crown to pardon someone. But if you look at in case of India, it is a constitutional scheme. In case of US, it is a constitutional scheme. But in case of it is a royal prerogative, royal privilege, right? Now अब आपको याद हो, आपको Biden government has also pardoned, right? पिछले साल आपको पता है, पिछले साल से ज्यादा हो गया. January, I think 2025, Trump has taken oath, right? And before that, Biden was the president of the US. He has used this pardoning power. ठीक है? जरा सो लिखिए तो जरा देखिए, in the US and India, the pardoning power of the president is a constitutional scheme. In the US and India, the pardoning power of the president is a constitutional scheme. Pardoning power of the president is a constitutional scheme, whereas in the case of UK, it is a royal prerogative. It is a royal prerogative. अब मान लो कि आपने पार्डनिंग के लिए अप्लाई किया है ना, क्या ये एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो देखेगा नहीं देखेगा? ये भी सवाल है. यहां तक कि भाई आप तो पता चल गया कि जो प्रेसिडेंट या गवर्नर एक्सरसाइज करते हैं वो ऑन द एड एंड एडवाइस. बट मान लो कि किसी विक्टिम ने डाला, पिटीशन डाला, ठीक है, पार्डनिंग पावर के लिए. नाउ क्या गवर्नमेंट उनको देख सकता है, या इट इज ए डिस्क्रिशन ऑन द गवर्नमेंट, कैन लुक इनटू इट एंड कैन नॉट लुक इनटू इट? Let me tell you, it is again Supreme Court has decided. It is a constitutional responsibility of the government to look into it. That is Khehar Singh versus Union of India.
यू नो खेहर सिंह कौन था? नो, इंदिरा गांधी को पे 2 उनके गार्ड ने ही उनको मार दिया था, राइट? उनको भी वो मिला था, पनिशमेंट मिला था, राइट? ठीक है, उसमें एक का नाम था खेहर सिंह। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट इन खेहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, the Supreme Court in Kheher Singh versus Union of India case held that the Supreme Court in Kheher Singh versus Union of India case held that it is the constitutional responsibility held that it is the constitutional responsibility of a great significance. It is a constitutional responsibility of great significance to be exercised by the government of a great significance to be exercised by the government when occasion arises. When occasion arises. ठीक है, तो उनको करना पड़ेगा। डिस्क्रिशन पावर गवर्नर करेंगे, देन आई विल टॉक अबाउट डिस्क्रिशन। लेट मी टॉक अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, इसी को मर्सी पेटिशन बोलते हैं, इसी को मर्सी पेटिशन ही बोलते हैं एक्चुअली, राइट? लुक एट द वाइस प्रेसिडेंट। Now, vice president is the second highest office in Indian executive, and he's just next to the president, right? Now, if you look at the election of the president, vice president, the vice president is also elected by an electoral college, right? Consisting of, elected and nominated MP. मतलब पार्लियामेंट इसको ये करता है, ठीक है? इसमें कोई दूसरा नहीं आता, स्टेट का प्रेसिडेंट टाइप नहीं आता है, स्टेट से लोग, राइट? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दे इलेक्ट देम। क्या बोलो बोलो बोलो? लोकसभा राज्यसभा, यही एमपी। एमपी मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के। अगर कुछ ऐसा होगा तो पर्टिकुलरली बोला जाएगा मेंबर ऑफ द लोकसभा और मेंबर ऑफ द राज्यसभा। जब एमपी से बोला जाता है तो एमपी, एमपी मतलब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा के भी मेंबर पार्लियामेंट में है और राज्यसभा के, तो ऐसे इनका इलेक्शन होता है, ठीक है? अब क्या है कि इनका काम क्या होता है बेसिकली, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होता है, वही जो प्रेसिडेंट में होता है, PRST, ठीक है? अब डाउट्स एंड जो भी मान लो डिस्प्यूट है, कोई अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई डाउट एंड डिस्प्यूट्स है, वही प्रेसिडेंट टाइप होता है कि अगर कोई भी डाउट एंड डिस्प्यूट्स वाइस प्रेसिडेंट रिलेटेड इलेक्शन से है तो उसको कौन देखेगा? उसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा, ठीक है? कोई दूसरा नहीं देखेगा। एंड द no one can file complaint on the basis of that the electoral college is not fully filled। तो भाई 2-4 एमपी मर गए हैं, ठीक है, मर गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितने हैं उतने वो इलेक्ट कर लेंगे, राइट? तो डाउट एंड जो डिस्प्यूट्स है वो लोग कौन से सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, और इस बेसिस पे नहीं सुनेगा कि जो कॉलेज है वो फुल्ली फिल्ड नहीं है। तीसरी बात मैंने बताया था प्रेसिडेंट के टर्म में कि जो भी काम अगर प्रेसिडेंट ने कर लिया है और एक टाइम के बाद कोर्ट ने कह दिया कि ये जो कैंडिडेट है इसका इलेक्शन इनवैलिड है, तो कैंडिडेट भी इनवैलिड हो जाएगा, राइट? तो जितना भी काम किया हुआ है वो प्रेसिडेंट ने या वाइस प्रेसिडेंट ने, ऑल वर्क शैल बी वैलिड, ऑल वर्क शैल बी इनफोर्स, ठीक है? ये सब बेसिक चीजें हैं। फिर और क्या बताया था? क्वालिफिकेशन, बट आई विल डू लेटर ऑन, राइट? वाइस प्रेसिडेंट
लिखिए तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में लिखिए, नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इज अ सेकेंड, next to the president, vice president is a second highest political office. Vice president is the second highest political office in India. Okay, like American polity, इसी में ऐड करना है, like American polity, like American polity. अब सीधा लिखिए इलेक्शन, right, elected by an electoral college, by an electoral college consisting of members of parliament. इतना ही है मोटा मोटी, नॉमिनेटेड इलेक्टेड सब इसमें आ जाएंगे। ये हो गया इलेक्शन। और लिखिए मैनर ऑफ इलेक्शन, okay, as same as the president, as same as the president, ठीक है, आज प्रेसिडेंशियल जो वहां पर जो भी मैनर होता है, मैनर हो गया। देखिए डाउट एंड डिस्प्यूट्स, डाउट एंड डिस्प्यूट्स related to election, इसमें भी यही लिख दूं मैं, एज सेम एज द प्रेसिडेंट, ये इतना ही याद रखना है, राइट, एज सेम एज द प्रेसिडेंट। कौन सुनता है डाउट एंड डिस्प्यूट्स? सुप्रीम कोर्ट, जिसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, जैसे प्रेसिडेंट का होता है वैसे ही होता है, ठीक है। और इसका जो डाउट एंड कोई भी जो प्रॉब्लम है cannot be filed, or election of the vice president cannot be filed on the ground that the electoral college is very much not fully filled, ठीक है। डाउट एंड डिस्प्यूट्स हो गया। उसके बाद क्या हुआ, लेट मी सी क्या पढ़ना है उसका, या क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन थोड़ा अंतर है इसीलिए क्वालिफिकेशन बता रहा हूं, अदरवाइज सेम है, राइट। फर्स्ट लिखिए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंडली एज लिखिए 35 years and above, third, the person should be qualified to be member of the Rajya Sabha, member of the Rajya Sabha। वहां पर क्या था, टू बी मेंबर ऑफ द लोकसभा, बस ये ध्यान में रखना है, राइट। फोर्थ है शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। पर आपको बहुत बार बताया है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एग्जम्प्टेड है, राइट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये क्वालिफिकेशन हो गया, इलेक्शन हो गया। आज ये नॉमिनेशन थोड़ा अंतर है नॉमिनेशन में,
कोई भी नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, बट कितने कैंडिडेट प्रपोजर चाहिए यहाँ पर? 20 इलेक्टोर्स टू फाइल नॉमिनेशन। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए क्यों किया गया है कि हर कोई ना वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो जाए, राइट? तो लिखिए टू फाइल नॉमिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, टू फाइल nomination for the post of vice president, the candidate must be proposed by 20 electors as a proposer, 20 electors as a proposer, and 20 electors as seconder. ट्वेंटी electors as a proposer and 20 electors as a seconder. ये electors कहां से होंगे? इलेक्टोरल कॉलेज से होंगे, यस, इलेक्टोरल कॉलेज से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से होंगे, राइट? तो ये हो गया नॉमिनेशन। उसके बाद नॉमिनेशन के बाद क्या है? हाँ, उनको 15,000 रुपए भी देना पड़ेगा। देखिए, फर्दर द कैंडिडेट हैज टू सबमिट a security deposit of rupee 15,000. The candidate has to submit a security deposit of rupee 15,000 in RBI. कहां पर? RBI में. The candidate has to submit a security deposit of rupee 15,000 in RBI. वहां पर किसका था? प्रेसिडेंट के टर्म में। नहीं हुआ पूरा उसका? पूरा नहीं हुआ ना तुम्हारा? नहीं हुआ, लिखो। The candidate has to deposit, the candidate has to submit a security deposit of rupee 15,000, 15,000 रुपए, राइट, इन RBI. प्रेसिडेंट के टर्म में कहां पर रखना पड़ता है? SBI में, है ना? RBI में रखना पड़ता है, ठीक है, चलो RBI में, गलत हो, RBI में रखना पड़ता है, राइट, ठीक है। चलो, तो हो गया हमारा, ये नॉमिनेशन हो गया। नाउ लेट मी टॉक अबाउट ओथ एंड अफर्मेशन। हु एडमिनिस्टर ओथ एंड अफर्मेशन टू द प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट। ओथ्स एंड अफर्मेशन। ओथ्स एंड अफर्मेशन। अब कौन करेगा यहाँ पर? द प्रेसिडेंट लिखे, द प्रेसिडेंट और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 10 मिनट ब्रेक, बस 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद ब्रेक ही ब्रेक है, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक दे दूंगा। क्या लिखा आपने? द प्रेसिडेंट और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स, द प्रेसिडेंट और a person appointed by the president administers oath and affirmation to the vice president. uh, 10 year लिखिए, 5 years, 10 year, 5 years देखिए। however the vice president can resign from his office, at any time
The vice president can resign from his office at any time by submitting a resignation letter to the president. Resignation letter to the president, or he may be removed earlier, or he may be removed earlier. और he may be removed earlier. अब देखो रिमूवल प्रोसेस क्या होता है, एक दो ख्याल रखना एक दो बात का कि रिमूवल प्रोसेस इसमें क्या होता है कि ये इनका जो रिमूवल हमेशा कहाँ इनिशिएट होगा, राज्यसभा में इनिशिएट होगा, लोकसभा में नहीं होगा, राइट. एंड द राज्यसभा विल पास द रिजोल्यूशन, राइट. दैट रिजोल्यूशन विल सब्सक्राइब बाय द 50 मेंबर्स, ठीक है. और फिर कौन सी मेजोरिटी लगेगी, इफेक्टिव मेजोरिटी, राइट. जैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहलाता है, इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है. और उसके बाद वो जाएगा लोकसभा में, लोकसभा भी पास करेंगे एंड देन द वाइस प्रेसिडेंट शैल स्टैंड रिमूव्ड. ये है रिमूवल प्रोसेस. बट लेट मी गिव यू 10 मिनट्स ब्रेक. सबके चेहरे पे ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा हो रहा है, तो या 10:52 I'll come 10:02, right? 11:02, या 11:02 11:03 चलेगा, 11:05 तक चलेगा. कितने क्लास लगेंगे, 4-5 क्लास, और 4-5 क्लास बहुत है.
Am I audible now? Yeah, Tamanna, Shelly, Sanskriti, Muskan, Deepika. Now, just write down about the removal process. For the office of vice president, देखिए, the parliament can remove the parliament can remove the parliament can remove the vice president. The parliament can remove the vice president. Next point you write, the removal resolution must be initiated in the Rajya Sabha. The removal resolution must be initiated in the Rajya Sabha. The resolution must be initiated in the Rajya Sabha after giving 14 days notice in advance. After giving 14 days notice in advance. Next point, the removal resolution must be subscribed by 50 members. The removal resolution must be subscribed by 50 members. Subscribed by 50 members. 50 members. The Rajya Sabha must pass it with the Rajya Sabha must pass with the Rajya Sabha must pass the Rajya Sabha must pass the removal resolution. The Rajya Sabha must pass removal resolution with effective majority. With effective majority. And when it is passed, it is sent to the Lok Sabha. It is sent to the Lok Sabha, who passes it, and the vice president stands removed. And the vice president stands removed. ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या होगा? राइट, क्या ग्राउंड है? Constitution does not mention any ground. देखिए, the Constitution does not mention any ground. The Constitution does not mention any ground for the removal of the vice president. Does not mention any ground for the removal of the vice president. How much dictated after the break? Just 2-3 line. Marks कितना? 2-3 लाइन से ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया? तो ज्यादा हो गया. Yes, 1, 2, थर्ड छोटा छोटा 3 पैराग्राफ, 3-3, 4-4 लाइन का. प्रियांश आधा पेज छोड़ ही रखो, हाफ पेज. यस, ग्राउंड ऑफ रिमूवल लिख लिया. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन एनी ग्राउंड ऑफ रिमूवल. अब क्या है, मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट के टर्म में कि जब प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल हो गया तो क्या कैन ही कंटिन्यू बियॉन्ड द 5 years? He can, if the election has not occurred. अगर इलेक्शन नहीं हुआ है, the president can go, can remain in office beyond the 5 years until the successor is elected. Similarly, vice president office, हो सकता है यहाँ पर. The vice president can, serve beyond 5 years until the
successor assumes the charges. लिखिए next point की like the president, vice president, like president, the vice president can hold office beyond, like the president, vice president can hold office beyond his term of 5 years, until his successor assumes charge. Until his successor assumes charge. समझ में आया? अच्छा, कितने बार प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का कोई कैंडिडेचर अपना क्लेम कर सकता है? How many times president or vice president can be elected from the same person? One person can be elected president or vice president for how many times? Unlimited, right? So vice president and president can be re-elected at number of times. The president and vice president can be elected. The president and vice president can be elected infinite. Yes. The president and vice president can be elected any number of times. Any number of times. ये हो गया just basic information about the vice president, right? Election, removal, right? Qualification, tenure. Let me talk about power and functions. Power and functions. Right? Generally we have done his power, right? जब आपको हमने पढ़ा था चेयरमैन, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, पावर एंड फंक्शंस, तो आप देखेंगे कि इनका पावर एंड फंक्शन दो तरीके से होता है. एक, जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट होता है, राइट, या किसी भी कारण से, राइट, या ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन. चेयरपर्सन, ठीक है, इन द राज्यसभा. कहां पर? इन द राज्यसभा. Otherwise, he act as a, or she act as a president when the office of president goes vacant or absent or any case, right? So that is a two work. Now, इसका भी power and function आप जानते हैं और इनका भी power and function जानते हैं. Got the idea? बस यही है. लिखिए, the vice president acts as the president. The vice president acts as the president. The vice president acts as a president in case of vacancy. In case of vacancy occurs in the office of the president. As in the case of vacancy occurs in the office of the president. क्या लिखा? The vice president acts as the president, right? In case of vacancy occurs in the office of the president. Due to resignation, let's see, due to resignation, impeachment, death, illness, or otherwise. माया, किसी भी कारण से वहां पर वैकेंसी आएगी प्रेसिडेंट के ऑफिस में, तो वो प्रेसिडेंट विल, वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, राइट? लिख लिया है छोटा किसी का? हो गया. अब जब वो प्रेसिडेंट का काम करेंगे तो उनको सैलरी किसका मिलेगा? प्रेसिडेंट का ही सैलरी मिलेगा. सारे सैलरी, इम्यूनिटी सारा प्रेसिडेंट का ही मिलेगा, राइट? लिखे नेक्स्ट पॉइंट.
when the vice president acts as a president, when the vice president acts as a president, when the vice president acts as a president, he will get immunities, salary, allowances, and other privileges, as the president, समझ में आया? तो जब वो वाइस प्रेसिडेंट का काम करेंगे तो पैसा किसका मिलेगा? सॉरी, जब वो प्रेसिडेंट का काम करेंगे तो प्रेसिडेंट की सैलरी मिलेगी, प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी मिलेगी. अदरवाइज he gets salary as a, as an ex officio chairperson of the Rajya Sabha. Next point you write, लिखिए, the vice president is the ex officio chairperson of the Rajya Sabha. Next point you write, the vice president is the ex officio chairperson of the Rajya Sabha. The vice president is the ex officio chairperson of the Rajya Sabha. In this regard, his power is as similar as the power of the Speaker of the Lok Sabha. In this regard, his power is as similar as the power of the Speaker of the Lok Sabha. Okay. However, power of the Lok Sabha, however, there are certain differences. अच्छा, वो differences क्या है इनके पावर में, स्पीकर के पावर में? ज्वाइंट सिटिंग बताया हुआ है ना, ज्वाइंट सिटिंग, माने बेल है ना, इस सब में वो वही डिसाइड करेंगे, उसमें ये नहीं करेंगे चेयरपर्सन. तो यही दो है, खत्म. अच्छा, इंडियन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के मामले में क्या बात है? क्या होता है इंडियन वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के मामले में? If you look at the office of the vice president of America, right, and office of the vice president of India, there are some similarity, there are some dissimilarity, right? डिसिमिलैरिटी क्या है कि आप देखेंगे कि जब वाइस प्रेसिडेंट वहां पर मर जाएंगे, राइट, तो वाइस प्रेसिडेंट विल टेक द चार्ज फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड. नाउ इंडिया में ऐसा नहीं होगा. इंडिया में कितना दिन ले सकते हैं ये लोग? 6 months, within which the president's election shall take in place or shall take place. Was idea? ठीक है, ये अंतर है. ये मैंने लिखवा दिया था, शायद लिखवा दिया था ना, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आई विल टॉक अबाउट. यस आशु, रेज योर क्वेश्चन. अब मैक्सिमम बातें हम वही करेंगे जो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है. कुछ नयापन आएगा, अदरवाइज रिपीटेशन होगा, एक्सेप्ट जुडिशरी की बातें. अदरवाइज हम गवर्नर करेंगे तो हम लोग रिपीटेड चीजें को भी उसको लाएंगे. Yeah, Ashu, you write your doubts or any clarification you want. Now let me talk about Council of Ministers. Right. बहुत बार मैंने आप लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताया है, राइट. इसका टोटल स्ट्रेंथ कितना हो सकता है वो बताया है. Who will act as a vice president? Now he's asking, sir, when president will act as a vice president will act as a president, then who will act as a vice president? No one will act as a vice president, right? But vice president is a something, office which can perform task of the president when vacancy occurs. Otherwise मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पर नहीं लगाया जाए तो क्या होगा?
ये क्या काम करेंगे? और अमेरिका में अलग है, अमेरिका में अलग है, वाइस प्रेसिडेंट का बहुत काम है वहां पर, कुछ भी नहीं होगा। तो बेसिकली when the vice president assumes the charge of the president, then the office of the vice president remain inactive, right? And here the deputy chairman work in the Rajya Sabha or the panel of vice chairperson, right? वहां से लोग आएंगे, तो कुछ नहीं होता है वहां पर। Now sorry, I talk about council of ministers. I told you that 2 articles devoted to here, important here, article 74 and article 75। हम लोग बात कर चुके हैं article 74, article 75। article 74 क्या है? There shall be a council of ministers headed by the prime minister to aid and advise the president who shall act according to such advice। ये जानते हैं आप बात। और आर्टिकल 75 में क्या जानते हैं आप? कि all ministers are appointed by the prime minister, ठीक है? So prime minister is appointed by the president and other ministers are appointed by the president on the advice of the prime minister, ठीक है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट एडवाइस किसका चलता है? और ये भी बताया है मैंने कि प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट, शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है? फिर ये भी बताया है कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुड बी 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर हाउस, ठीक है? ये बातें हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। एक चीज और मैं बता देता हूं कि क्या है कि हमारे यहाँ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, टोटल स्ट्रेंथ कितना हो सकता है? टोटल 80 अराउंड हो सकता है, 79-80 हो सकता है, राइट? बट ये फॉर्मल डिवीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन डज मेंशन यहाँ पर जो कुछ अपर लेयर के मिनिस्टर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेटरन, राइट, उसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, although it is an informal division, cabinet minister। Now who is a cabinet minister? The cabinet minister are like the home minister, defense minister, finance minister, है ना? या आप कोई भी मिनिस्टर जो मेजर मिनिस्ट्री है, राइट? उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर के बाद क्या होता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का मतलब ये मत ले लेना कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या है, वो बिहार का मिनिस्टर है, नहीं। It is he is a captain and minister of state is a vice captain of the department। टीम है ना, अलग अलग टीम की अलग अलग कैप्टन होते हैं, वाइस कैप्टन होता है। वैसे ये कैप्टन होगा होम मिनिस्टर का, और उसका एक वाइस कैप्टन होगा, जैसे यहां पर होगा द मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम, राइट? हो सकता है कि डेप्टी मिनिस्टर भी हो। मान लो कि आपको बड़ा करना है इसको, तो डिप्टी मिनिस्टर किसी मिनिस्टर को बना दो, वो डिप्टी मिनिस्टर है, राइट? अब एक ऑफिस होता है जिसको हम बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्जेस, इंडिपेंडेंट चार्जेस और इंडिपेंडेंट चार्ज, सिंपली ऐसे लिखते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज, राइट? अब ये कौन है? ही इज अ मिनिस्टर, राइट, who has no captain। He is a minister, right, of a department who has no captain। He is a vice captain itself, who is a captain or vice captain both, right? तो अभी देखेंगे कि आपकी हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर भी होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, डिप्टी मिनिस्टर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट? बट कुछ ये भी होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्जेस, एंड दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये कैबिनेट का पार्ट नहीं होता है, ये भी कैबिनेट का पार्ट नहीं होता है। कैबिनेट में मेजर जो मिनिस्ट्री होती है उसको बोलते हैं हम कैबिनेट। Who's heads the cabinet? The prime minister heads the cabinet। Cabinet is always headed by the, but let me tell you, Indian democracy is not a cabinet form of democracy। American British is, ब्रिटिश में कैबिनेट का बड़ा रोल है, राइट? कैबिनेट सेक्रेटरिएट का बहुत बड़ा रोल है, राइट? इसके बाद नीचे आता है सेक्रेटरी उस डिपार्टमेंट का, राइट? और ऐसे ब्यूरोक्रेसी, फिर ब्यूरोक्रेसी की चेन है सेंटर से लेके स्टेट तक। ये इनफॉर्मल डिवीजन है। क्या ये
This is an informal division of the council of ministers. It's not, constitution does not mention the cabinet minister or minister of state or minister of state independent judges. got the idea? ब्रिटेन में क्या है, प्राइम मिनिस्टर is a first among equals. इंडिया में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूके में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नाम का कोई चीज नहीं है, पीएम ऑफिस. अभी कौन सा सेवा हो गया, वो तीर्थ सेवा, सेवा तीर्थ, ठीक है. एंड नागरिक देवो भव, हम लोग देव है और वो हमारे लिए सेवक है. जो भी कुछ आपको सेवा चाहिए आप बोलिए सरकार से, सरकार करेंगे, है ना. Look at the ethics. It simply reflects the work ethics of the particular government, right? But कहने का कुछ और करने का कुछ और. That is a paradoxy in the government you can find. In the name only. Yes, मैं तो वही बोल रहा हूँ, नाम के लिए है, right? कि आप देवो भव, फिर जाओ तो फिर लाठी पड़ेगी और कुछ पड़ता नहीं है. Anyway, so this is council of minister, right? Who has the council of minister? The prime minister, right? And prime minister has a very important role in the council of minister, right? Literally, prime minister decides everything. Let me tell you, literally prime minister decides everything. अभी आपको पता है कि पीएमओ, बेसिकली पीएमओ बना कब, पता है आपको पीएमओ बना कब? किसी को नहीं. पीएमओ जो संस्था है नाम पड़ा था मोरारजी देसाई के टाइम पे, राइट. एंड पीएमओ बना इंदिरा गांधी के टाइम पे. मतलब उतना इफेक्टिव हो गया, राइट. ज्यादा इफेक्टिव कब हुआ? इंदिरा गांधी के टाइम पे, राइट. और इंदिरा गांधी के बाद और ज्यादा, क्योंकि शास्त्री शास्त्री तो पहले था. शास्त्री के टाइम पे पीएमओ ने, फिर इंदिरा गांधी ने इसको एक्सरसाइज किया, ठीक है. और पीएमओ का नाम पीएमओ पड़ा बेसिकली मोरारजी देसाई के टाइम पे. अच्छा, उससे पहले क्या हालत थी? प्राइम मिनिस्टर होते थे, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे और कुछ सेक्रेटरी और थे. प्रिंसिपल सेक्रेटरीज एंड few more secretaries. They used to assist the prime minister in advice, right, in all matters. But later on इसका जो टाइम, इसका जो साइज है ना, वो बढ़ता गया. आज कम से कम 500 ब्यूरोक्रेट बैठते हैं इसमें, पता है आपको पीएमओ में? The more than 500 bureaucrats sit in the PMO, and PMO looks after every file of the departments, of each and every department. Now, how PMO has become very, a centralized authority. It is not constitutional body. PMO is not constitutional body because it has no constitutional recognition, but it supervises, every function of every department. Okay. Anyway, so look at the prime minister, right? Prime minister is a sun. If you can see the council of ministers as a solar system, every ministers revolve around the prime minister. Okay. So prime minister decides everything. As I told you that prime minister appoints. जितने भी मैंने कहा कि प्रेसिडेंट करते हैं, जितना भी प्रेसिडेंट को पढ़ा है मैंने, प्रेसिडेंट ये करते हैं, प्रेसिडेंट ये करते हैं, बेसिकली करते कौन है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है. चाहे वो अपॉइंटमेंट हो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करना हो, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिसी को डिसाइड करना है, चाहे वो रात में 8 बजे नोट को बंद कर देना है, राइट. ये प्राइम मिनिस्टर ही कर सकता है, राइट. या 1,20 करोड़ जो फंड devoted to प्रधानमंत्री जन गरीब कल्याण योजना during the COVID-19, that was done by the prime minister. Prime minister can declare war, peace, anything, right? Prime minister is basically, sole spokesperson of the government, right? And of course, prime minister heads the council of ministers. समझ में आया? Right? उसके बाद कुछ कमिटी होती है, कैबिनेट कमिटी. मैंने कहा क्या सिंबल है? जैसे केक लाया तुमने, केक पे ऊपर क्यों हम चेरी रखते हैं? रखते ना, हर चेरी पे, केक पे चेरी रखते,
क्यों रखते, हटा दो। वो चेरी किसी के मुंह में जाता है क्या? नहीं, एक आध लोग उठाया और जब मुंह में डाला, उसके बाद तो केक ही केक मिल रहा है सबको, राइट? सो it's just ceremonial. It's not only constitutional, it is also, somehow you can say that procedural, right? कि भाई एक स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, ठीक है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होते हैं ऐसा, स्पेशली जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसलिए रखा जाता है। पूरी दुनिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपको एक नॉमिनल हेड मिलेगा और एक सब्सटैंशियल हेड मिलेगा जिसके पास पावर है। तो प्राइम मिनिस्टर हैज सब्सटैंशियल पावर। Got the idea? So that is about council of ministers headed by the prime minister. Fine. Now we have how many time? Approximately 20, 25, 27 minutes, right? Now write something about the council of ministers. देखिए आर्टिकल 74 and article 75, article 74 and article 75 deals with council of ministers, comma, appointments, tenure, responsibility, qualification, and so on. ये दो ही आर्टिकल है, राइट? जब यहां पर आपको प्रेसिडेंट घुसाना हो तो एक और आर्टिकल आ जाता है, जो मैंने आपको कहा आर्टिकल 53, जो एग्जीक्यूटिव की बात करता है, राइट? जो ट्रायंगल हमने बनाया था, उस ट्रायंगल में से इसको हटा देना है, बट इसकी बातें करना है, राइट? नाउ राइट, नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 74, this is a repetition. Article 74 says that there shall be a council of minister. Article 74 says that there shall be a council of minister headed by prime minister. There shall be a council of minister headed by prime minister to aid and advise to the president, who shall act according to such advice. Who shall act according to such advice. समझ में आया? राइट, नेक्स्ट यू राइट, थोड़ा मैं आर्टिकल 75 में थोड़ा शॉर्ट हो जाता हूँ यहाँ पर, राइट? आर्टिकल 75 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ना, जब प्रेसिडेंट बता रहा था, तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट होना है, मुझे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेट करूंगा मैं बस। देखिए अकॉर्डिंग, नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75, the president appoints prime minister, the president appoints prime minister and other ministers on the advice of the prime minister. Next point, ministers hold office during the pleasure of the president. Next, the total strength of the council of ministers cannot exceed total strength of the council of ministers cannot exceed
15% of the 15% of the total strength of the Lok Sabha. The total strength of the Council of Ministers cannot exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha. Right? That is the Council of Ministers. 1 minute. Acha, who administered this oath to this minister? Who administered oath to this minister? अच्छा, स्पीकर को कौन ओथ दिलाता है? अब करना क्या है? अब जब भी पढ़ाई करना है तो थोड़ा कंपैरेटिव में करना है, राइट? कंपैरेटिव बोले तो जैसे मैंने आपको रिमूवल प्रोसेस बता दिया. अब रिमूवल प्रोसेस में केवल मैं एक रिमूवल प्रोसेस बताऊंगा, वो है जस्टिस, जजेज. आपको जब भी पढ़ना है थोड़ा सा कंपैरेटिव में पढ़ना है. अच्छा, स्पीकर का ये है तो प्रेसिडेंट का क्या है, तो वाइस प्रेसिडेंट का क्या है. ठीक है, स्पीकर कोई भी सेपरेट ओथ एंड अफर्मेशन नहीं लेता है. ठीक है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है ना, वो सेपरेट ओथ एंड अफर्मेशन नहीं लेता है. ठीक है, तो इसीलिए मैंने पूछा कि जो भी पढ़ो, जैसे ओथ एंड अफर्मेशन आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो कि भाई कौन को किसको क्या कौन कौन दिलाता है. एक जगह रखोगे ना सारे लोगों को एक साथ, तो 2-4 बार रिवीजन में आपके पास सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप गलती कम करोगे. अदरवाइज मान लो कि आप सबका ओथ एंड अफर्मेशन पढ़ रहे हो, कब? प्रेसिडेंट के टाइम पे प्रेसिडेंट का पढ़ रहे हो, स्पीकर मतलब जज के टाइम पे जज का पढ़ रहे हो, और फिर ऐसे पढ़ के जा रहे हो, तब क्या होगा? देयर मे बी चांस टू डू मिस्टेक. बट व्हेन यू डू कंपैरेटिव स्टडी, हमेशा कंपैरेटिव स्टडी करो ऑफिस को. उनका अपॉइंटमेंट भी, उनका रिमूवल भी, उनका ओथ एंड अफर्मेशन, एवरीथिंग दैट यू डू कंपैरेटिव स्टडी. ठीक है? हाँ, तो मिनिस्टर को ओथ एंड अफर्मेशन कौन दिलाता है? ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने लिखा था, इसको ओथ एंड अफर्मेशन कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट और पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. या प्रेसिडेंट दिलाएगा. लिखिए. ये क्या नाम है प्रियांश? ऐसा नहीं है. अ पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट दिलाएगा. प्रेसिडेंट क्या करेगा? ये भी काम नहीं कर सकता है तो और क्या करेगा वो? तो उसमें है, वाइस प्रेसिडेंट के केस में है, राइट? जज के केस में है प्रेसिडेंट या एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम. ये याद रखना. ये सब चीजें जब आप कंपैरेटिव में पढ़ोगे ना, तो थोड़ा सा याद रहेगा, ध्यान रहेगा कि कौन क्या कर सकता है, राइट? लिखिए. द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर the president shall administer to oath and affirmation. The president shall administer the oath and affirmation to all ministers, including prime minister. The president shall administer oath and affirmation to all ministers, including prime minister. अच्छा, इनकी सैलरी कितनी होगी मिनिस्टर्स की? कौन डिटरमाइन करेगा? ये सब आर्टिकल 75 में. पार्लियामेंट. लिख दीजिए. Salary and allowances of ministers are determined by the parliament from time to time. Salary and allowances of ministers are determined by the parliament from time to time. And it shall be specified in कौन से शेड्यूल में? थर्ड या सेकेंड? सेकेंड. And it shall be specified in second schedule. And it shall be specified in second schedule. अच्छा, थर्ड शेड्यूल में क्या है? ओथ ऑफ मिनिस्टर. तो पहले सैलरी, पहले वेतन, उसके बाद काम, है ना? तो पहले सेकंड शेड्यूल में क्या है? सैलरी है. सेकंड और थर्ड शेड्यूल में है ओथ एंड अफर्मेशन. ये याद रखना है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से हो गया. नाउ लिखिए 1 मिनट. लिखिए प्राइम मिनिस्टर. ये टोटल टाइटल प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर.
प्राइम मिनिस्टर। अब जो प्राइम मिनिस्टर का वर्ड है ना, तीन आर्टिकल में, एक है 74 में, एक है 75 में, और है एक है 77 या 78 में। तीन जगह बातें हैं। एक जगह है कि भाई प्राइम मिनिस्टर हेड होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, एक है कि भाई प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे कौन, प्रेसिडेंट। एक जगह है प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी होगी कि प्रेसिडेंट को वो सारी इंफॉर्मेशन दे सरकार की, राइट। अब प्राइम मिनिस्टर का रोल कितना है, इतना ज्यादा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज पार्लियामेंट्री प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को शिप ले लोगे कि ये शिप है, तो उसका कैप्टन कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत है, ठीक है। इज अ बेसिकली सन in the that solar system of the council of minister. Everything revolve around the prime minister. Got the idea? And prime minister decides everything. सारा चीज यही डिसाइड करते हैं। अब ऐसे कहने से तो काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा क्या क्या डिसाइड करता है एवरीथिंग में, राइट। तो 4-5 हेड, मतलब उसमें हमें बताना पड़ेगा क्या क्या काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर, राइट। इवन प्राइम मिनिस्टर यू नो आज आई टोल्ड यू एवरीथिंग। अब हम जैसे प्राइम मिनिस्टर के को एरा को लेकर के हम फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं। अच्छा, मोदी का फॉरेन पॉलिसी क्या है, नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी क्या था, राइट। मोदी डॉक्ट्रिन क्या, अच्छा मोदी डॉक्ट्रिन क्या है, एनीवन, व्हाट इज मोदी डॉक्ट्रिन, नो आइडिया, यार हो गया, व्हाट इज मोदी डॉक्ट्रिन, नो, मोदी डॉक्ट्रिन इज अ 5D डिप्लोमेसी, डेमोग्राफी, डेवलपमेंट, डायस्पोरा, राइट, ठीक है। कितना डी हो गया, 4। एक और है डी, डिप्लोमेसी, डेमोग्राफी, डेवलपमेंट, then basically diaspora, wherever he goes, basically he talks to the diaspora, right. This 5, 5 नहीं हुआ ना, एक छूट रहा है, लिखने से हो जाएगा। डेमोग्राफी, डिप्लोमेसी, डायस्पोरा, डेवलपमेंट, राइट। और क्या बच गया, डेमोक्रेसी लिख दिया मैंने, नहीं वो तो क्या 5, डिक्टेटरशिप, क्या डिफेंस मोदी डॉक्ट्रिन में, हाँ वो वहां पर मिल जाएगा। वहां पर तो आप जितना जगह पर ज्यादा डालोगे, फॉरेन पॉलिसी ऐसी चीज है, सब मिलेगा, राइट। बट सम्मान, डिप्लोमेसी आ जाता है, ये दिस इज डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मीन, डिप्लोमेसी इज अ बिग टॉप, राइट। डिप्लोमेसी अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आप 10-15 मिनट, थ्री टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी। वन इज कॉल्ड बायलैटरल डिप्लोमेसी, right, that is called track 2. One is called track 1.5, right, that is called a diplomacy between the government and the autonomous body. Then there is a called track 2 diplomacy, track 1, track 1.5, track 2. और जितने आप वो दिख रहा है, क्या नाम है, नेबरिंग नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी, सागर विजन, सारा मोदी जी का ही क्या हुआ है। अभी महासागर विजन आया है, राइट। वो सब ऑल आर पार्ट ऑफ द मोदीज फॉरेन पॉलिसी, बट particular 5D is called Modi doctrine. All are part of the Modi's foreign policy, right? चाहे वो आप नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी या एक्टिस्ट पॉलिसी, राइट। चलिए एक्टिस्ट पॉलिसी आता है, एक्सटेंडेड नेबरहुड फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। एनीवे, आई वाज जस्ट emphasizing the role of the prime minister, right, about the prime minister.
देखिए, the prime minister plays a vital role. The prime minister plays a vital role in parliamentary democracy. The prime minister plays a vital role in parliamentary democracy, and this is why parliamentary democracy is called as prime ministerial form of government. This is why parliamentary democracy is called as prime ministerial form of government. This is why parliamentary democracy is called as prime ministerial form of government. एक वर्ड लिखा रहता है, आप जब इसमें पढ़ोगे लक्ष्मीकांत में, प्राइम मिनिस्टर इज अ डिफैक्टो पावर. प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ डिफैक्टो पावर, ही इज अ डे ज्यूरी. उसके पास लीगल पावर है भाई, राइट. डिफैक्टो कौन होता है? मैं डिफैक्टो का नाम बता देता हूँ. डिफैक्टो पावर किसके पास था? यूपीए के टाइम पे सोनिया गांधी हैड डिफैक्टो पावर, प्राइम मिनिस्टर हैज डे ज्यूरी पावर, राइट. क्योंकि ज्यादा इन काम डिसीजन कौन लेती थी? सोनिया गांधी, राइट. ठीक है. अच्छा, उसको इंप्लीमेंट करने वाले कौन थे? मनमोहन सिंह. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. द प्राइम मिनिस्टर is a core in parliamentary democracy. Is core in parliamentary democracy. If the council of ministers is a solar system, then the prime minister is the sun. Then the prime minister is the sun. ठीक है. The prime minister decides everything in relation to the council of ministers, comma, president, constitutional bodies, foreign policies, domestic policies and programs, and so on. Domestic policies and programs and so on, right? Now next point you write, in relation to the council of ministers, prime minister has following powers. Repeat ही होगा जो भी होगा. In relation to the council of ministers, the prime minister has following powers. अब इसमें ABCD करके एक आध लिख लेता है. Okay. The prime minister advises the president. The prime minister advises the president to appoint ministers, Second, the prime minister allocate and reshuffles
The Prime Minister allocates and reshuffles portfolios among ministers. इसका मतलब समझ में आया? अरे पहले लॉ मिनिस्टर थे, अब एक्स्ट्रा मिनिस्टर बन गए, कुछ दिन बाद दूसरी मिनिस्ट्री में चले जाओगे, कैसे चले जाओगे? अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर. लेट मी गिव यू एग्जांपल. किरण रिजिजू जी और स्मृति ईरानी, यू टेक, कितनी मिनिस्ट्री इनकी बदली है, राइट? निर्मला ताई हैं जो बनी रही हैं अपनी. लुक एट निर्मला ताई, राइट? शी रिमेन्ड ऑन that position, right? She, yeah, I think who first finance minister, the woman finance minister. Though what? Earlier she was a defense minister. In which government? This government में 2014 में? क्या बात करते हो? नहीं भाई, थ्रू आउट फाइनेंस मिनिस्टर है. अच्छा, अरुण जेटली थे. ओके, उसके बाद बनी है तो कंटिन्यू रही है. उसके बाद अदरवाइज आप देखोगे मिनिस्ट्री की ना बहुत फ्रीक्वेंट बदला हुआ. निर्मला सीतारमन, शी हैज बीन द लॉन्गेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर, राइट? पर देखना, अरुण, आई रिमेम्बर, हो सकता है अरुण जेटली पहले डिफेंस मिनिस्टर थी, बहुत काफी टाइम से ये है. अदरवाइज सबका बदलता रहता है. तो हु डज इट? द प्राइम मिनिस्टर बेसिकली, राइट? नेक्स्ट यू राइट, the prime minister can ask a minister to resign from the office. The prime minister can ask a minister to resign from the office. Earlier was Arun Jaitley. Okay, fine, friends. Yeah, the prime minister can ask a minister to resign from the office. Next, look, the prime minister presides meeting of all council of ministers. The prime minister presides meeting of all meeting of the council of ministers. The prime minister presides all meeting of the council of ministers. अब मान लो कि कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सुन ही नहीं रहा है तो क्या कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर खुद ही रिजाइन कर देगा, सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गया, राइट? देखिए, द प्राइम मिनिस्टर can resign from the office. The prime minister can resign from the office. That will bring collapse to the council of ministers. The prime minister can resign from his office. That will bring collapse of the council of ministers. Collapse of the council of ministers. Okay. Now, change the point and write the prime minister in relation to the president has following power. The prime minister in relation to the president has following powers. ठीक है, अब इसमें फिर से ABCD लिख दीजिएगा, राइट? देखिए, द प्राइम मिनिस्टर इज अ connecting linkages between the prime minister is a connecting linkages between the council of ministers and the president. The prime minister is a connecting linkages between, right? इसको बोलते हैं bridge between, right? ये भी बोल सकते हैं bridge between the council of minister and the president. It's connecting link, right? Second, next point, देखिए, the prime minister advises the president
about all administrative works, about all administrative works, about all administrative works. Okay, for example, appointment of, for example, appointment of chairperson, appointment of chairperson and members of, appointment of chairperson and members of constitutional bodies, constitutional bodies like finance commission, election commission, UPSC, UPSC, and so on. UPSC and so on. Right? हो गया. Now let me move. Like the Prime Minister in relation to the Parliament has following power. The Prime Minister in relation to the Parliament has following power. The Prime Minister, the Prime Minister in relation to the Parliament has following powers. First लिखिए, he is the chief spokesperson of the government. He is the chief spokesperson of the government. He is the chief spokesperson of the government. He is the chief spokesperson of the government in the Parliament. Next, he advises the president. He advises the president to dissolve or prorogue. He advises the president. Yeah, he advises the president to dissolve or prorogue the parliament. Next, the Prime Minister announces major policies and programs. Prime Minister announces, PM announces policies and programs. Of the government in the Parliament. ये मेजर वर्क है, दो तीन और वर्क लिख लीजिए. देखिए, the Prime Minister is instrumental. इसमें एक्स नहीं, अब अलग से, अब इन रिलेशन टू नहीं हुआ, अब लिखिए इन रिलेशन टू लिखाना है फॉरेन पॉलिसी, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा. राइट, अनदर चैप्टर. देखिए, द प्राइम मिनिस्टर is an instrumental in devising. The Prime Minister is an instrumental in devising and designing. In devising and designing foreign policies. Foreign policies. Example लोगे, लिखिए. For example, Nehru was an architect of India's foreign policy. For example, Nehru was an architect. For example, Nehru was an architect of India's foreign policy in post-independent India. Nehru was an architect of foreign policy in post-independent India. Like currently, the Prime Minister Narendra Modi. Currently, the Prime Minister Narendra Modi has shaped India's foreign policy. Has shaped India's foreign policy.
has shaped India's foreign policy, like neighborhood policy, comma, extended neighborhood policy, and so on. So that is about Prime Minister. Tomorrow I'll focus a bit on Cabinet Committee, थोड़ा सा, and then I'll move to the state. पढ़ा दूं या पहले judiciary पढ़ा दूं? State पढ़ा दूं. So I'll focus on state. और कल ही state खत्म हो जाएगा. चलो. So see you tomorrow. Right? Focus on what I have taught you. Right? Okay, everyone. See you tomorrow.